वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय सोलो पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम मैंने अभी तक सोचा नहीं है। बहुत साल पहले शेक्सपियर जी ये कह गए थे दैट व्हाट्स इन द नेम, नाम में आखिर रखा ही क्या है। तो नाम को साइड करते हुए सीधा काम की बात पे आते हैं। In this very first episode, I'm going to be talking to you about New Year resolutions and why we fail at our New Year resolutions और हम इनको सक्सेसफुली कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? नया साल आते आते ना हम सब लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की। हम अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज पे काम करना चाहते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न वी मेक रेजोल्यूशंस। बट नाउ इट्स 2 वीक इनटू दिस न्यू ईयर ऑलरेडी। आज 16 जनवरी 2024 है। सो पिछले 15 दिनों में ईमानदारी के साथ लेट्स टेक अ रियलिटी चेक एंड सी हाउ मेनी ऑफ आवर रेजोल्यूशंस वी आर एबल टू एक्चुअली कमिट टू एंड फॉलो। What is your answer there? Right in the beginning of this video, I have 2 things to say to you if you have given up on your resolutions already. सबसे पहली चीज़, you are not alone. You know, even I had a very tough and bad start to this new year. I had to deal with a lot of stress, pain, trauma, and a bunch of other things. Even I couldn't get a lot done. So if you had a tough start, I understand you, I see you. And the second thing, it is absolutely okay to give up on your New Year resolutions. कोई बात नहीं अगर आप अब तक execute नहीं कर पाए हो, because this only means that your mind and your body are right now not ready to execute your New Year resolution. Now, what do I mean by this? I'm going to decode all of this in this episode going forward. But right now, I just want to make a promise that today in this video, I'm going to help you form a very deep, meaningful, personal and practical connection with your resolution so that you don't fail it, so that you succeed at it. Ready for it? Okay. I'll start with a quick introduction of mine. Hi, my name is Shobha Rana. I am an emotional intelligence, mindset and holistic wellness coach. Today's topic is New Year resolutions. Let's first understand that why we fail over and over again at our New Year resolution. There are 3 major reasons that I have been able to identify. The number one reason we fail at our resolution is that we confuse our resolutions with our goals. Our resolutions and goals are 2 different things. The resolution can be a means to reach to our goal, but this is only one of the ways or one of the methods to reach to our goal. Our goal is something bigger, something more meaningful, something that has a deep value for us. Let me, take an example. Let's say आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है that you want to go to the gym every day, जो बहुत सारे लोगों का होता है, right? लेकिन आपका गोल है to have a healthy and fit body. Now you're a person who has never gone to the gym. Maybe there is no good gym near your house, or maybe you don't like the vibe of going to the gym. You don't like exercising with weights. Whatever your reason may be, going to the gym is not a fun experience for you. Then you will never be able to sustain and fulfill this resolution. In fact, at that time, what you should do is come to your goal. Your goal is to have a healthy and fit body. And for that, going to the gym is only one of the ways. You can try out different things. You can go for swimming, cycling, jogging, yoga, eating healthy. There are so many other ways. Just find what really clicks with you, what makes you feel good about yourself, what you enjoy doing, because that is something that you will be able to do for longer. Now, having said so, I am not saying कि आप अपने comfort zone से बाहर मत निकलो. बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लेकिन पहले वो चीज़ें करो जिनको आपको करने में मज़ा आता है, ताकि आप थोड़ा सा अपने गोल के करीब पहुंच पाओ। जब आप अपने गोल के पास जाने लगते हो ना, फिर आपके अंदर वो मोटिवेशन आती है कि आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक कर सको। पहले सीधा ही लड़ाई मत शुरू करो अपने रेजोल्यूशन के साथ। ऐसा रेजोल्यूशन बनाओ जो थोड़ा सा इंजॉयबल हो आपके लिए, थोड़ा नहीं काफ़ी इंजॉयबल हो आपके लिए। द सेकेंड रीज़न यू आर फेलिंग एट योर रेजोल्यूशंस इज दैट यू आर थिंकिंग टू बिग and too quickly. नए साल आते हुए हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि अपनी सालों पुरानी आदतों को हम एक दिन में बदलना चाहते हैं। Now 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में सिर्फ और सिर्फ तारीख बदलती है, आप नहीं। आप वही इंसान हो, तो आपको अपने आप को धीरे धीरे प्रिपेयर करना होगा, अपने माइंड और बॉडी के कनेक्शन को बनाना होगा, ताकि आप अपना रेजोल्यूशन को एग्जीक्यूट कर पाएं। Changing these lifelong habits takes time and patience and also preparation for your mind and body.
And that brings me to my third reason. The third reason why most people fail at their resolutions is that they are not working on the mind and body connection. Let's understand कि resolutions बनते कैसे और कहाँ हैं. Your resolutions are made in your mind. Your resolutions are thought that your mind thinks, and then you expect your body to help you execute them. Let's say you've made a resolution to read 20 pages every day. That is something that your mind has thought. That's a goal for you. Now, your body is expected to execute that for you by sitting in one place for, let's say, 20-30 minutes, quietly, with a book in the hand, without any distractions, with lots of focus. Your mind is making the resolution and your body is executing. But if you have never read a page in your life, or you're somebody who doesn't like to sit by themselves, who's always distracted, who lacks focus, then executing this resolution is very difficult for you. माइंड ने तो सोच लिया, बिकॉज थिंकिंग इज द ईजिएस्ट थिंग टू डू, लेकिन बॉडी अभी तैयार नहीं है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए. सो बॉडी को तैयार करना पड़ेगा. एंड हाउ यू कैन डू दैट, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टिप्स दैट विल हेल्प यू फुलफिल योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस. द फर्स्ट टिप दैट आई हैव फॉर यू इज अंडरस्टैंड योर गोल्स. When you deeply understand your goals, when you know what truly motivates you, आपको अंदर से क्या करना है, क्या करने का आपका बहुत ज़्यादा मन है, जब आपका वाई क्लियर हो जाता है ना, तो आपका न्यू ईयर गोल्स को अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. आस्क योर सेल्फ वाई यू वॉन्ट टू चेंज, वाई यू वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग, वाई यू वॉन्ट टू गो टू द जिम, वाई यू वॉन्ट टू रीड. Find your answer, find your goal, and then you'll be able to achieve it. Don't follow a trend. Don't just make a resolution because your friends are making it or it's trending. Because that way you will not build a deeper connection with it. और जब तक आपका वो रीज़न बहुत गहरा और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जब तक वो गोल या रेजोल्यूशन आपके लिए बहुत पर्सनल नहीं होगा, आप उसको नहीं कर पाओगे. द सेकेंड टिप इज टू लिमिट योर रेजोल्यूशन. न्यू ईयर की एक्साइटमेंट में हम 10-10 रेजोल्यूशंस बना लेते हैं. हम अपने लाइफ के हर एरिया को इम्प्रूव करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू वर्क ऑन आवर सेल्स, आवर फिजिकल बॉडी, आवर सोशल सर्कल, आवर जॉब, आवर करियर, आवर पैशन. वी वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, we want to make new friends. Now, this is too much to pack in your current lifestyle. Your mind and your body are not prepared for doing so much, for helping you do so much. So please give it the time and the patience and limit your resolutions to one resolution or maybe 2 at max. जब आप वो 2 चीज़ें करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ और वहाँ पे कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, तब आप कुछ और नई चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो, नए गोल्स ऐड कर सकते हो. लेकिन तब तक सिर्फ 1 या 2 चीज़ें करिए, क्योंकि जब आप 10 चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं ना, तो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाता है एंड यू एंड अप जस्ट गिविंग अप. सो माई टिप फॉर यू इज टू लिमिट योर रेजोल्यूशंस. मेक one goal and go after that one goal with full focus and energy. See the results coming, and then maybe when you're more disciplined, then add another goal to your list. The third tip is to ready our mind and our body. This is something that I have been talking about since the very beginning of this video. अपने mind और body को ready करना आपके New Year resolutions के लिए. Mind ने तो सोच लिया that I want to run 10 kilometers every morning. But is your body prepared? If you are somebody who has never ran a kilometer in their lives, or you are somebody who does not even like waking up early in the morning, then how will you run 10 kilometers every day? It's just not practical and possible for you. और अगर आप ज़बरदस्ती अपने माइंड से अपनी बॉडी पर ये प्रेशर डलवाओगे कि रोज सुबह 5 बजे उठो और 10 किलोमीटर भागो, तो शायद आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीना कर लोगे, लेकिन इवेंचुअली गिव अप कर दोगे. So to make this goal, resolution sustainable for you, what you have to do is start preparing your body with your mind. Your mind wants you to run 10 kilometers. Fine. Prepare your body. Start waking up at the right time. Start going for, let's say, 1 kilometer. Slowly, after a couple of weeks, build to 2 kilometers. Slowly build to 4. And like that, push your limits to 10 kilometers. Eventually, let's say after 3-4 months. When you go in this slow and steady fashion, क्या होता है ना, आप अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि आपको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स मिलने लग जाते हैं. जब आप पहला किलोमीटर भागते हो 1 हफ्ता, तो आपकी बॉडी को समझ में आता है कि yes, I can do it. It is possible. Then the next week, you do another increase your goal and add another kilometer to it. Then your body is able to achieve that also. And your body is enjoying this because it is able to achieve those small, simple, measurable, actionable goals. So do that. This will prepare your mind and body. The fourth tip is to plan, 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 and plan. We Indians are famous for our last minute planning. लेकिन
जब आप अपने गोल्स और रेजोल्यूशंस को पूरा करना चाहते हैं, देन यू हैव टू प्लान. एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स दैट पर्सनली हैज वर्कड वंडर्स फॉर मी इज रिवर्स engineering. Reverse engineering is nothing but it's the technique where you break down one big goal into small goals and milestones, and then you start achieving these milestones and measure your growth and progress with the achievement of these milestones. बेसिकली एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके वो छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना है, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को भी मेजर कर पाओ कि आप कितना कर पा रहे हो. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो लेट्स से इन 6 months यू वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस. अभी हम जनवरी 2024 में हैं. बाय जून 2024 यू वांट टू हैव योर बिजनेस अप एंड रनिंग. नाउ व्हाट विल बी द स्मॉलर गोल्स फॉर यू टू हैव दिस ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस? Let's say your first milestone would be to source the right jewelry or to design it. The second could be to have an e-commerce website or a portal where you'll be selling it. Third would be to set up a payment gateway. Fourth could be to have a team that will help you in executing sourcing and all of these other things. The fifth could be let's say delivery and return and exchange policy, etc. So this is your whole idea that you have now divided into smaller goals. Now what will you do in January? What will you do in February? What will happen in March? And eventually all of this will together help you to launch your business in June 2024. So when you're reverse engineering, you're actually assigning a goal, a small goal to yourself for every week, every month. And then by the end of that week and month, you can measure your progress and success. If you are lagging behind, then you can maybe speed up to come up to the mark. और अगर आप already वो पूरा कर रहे हैं तो आप अपने next goal पे जा सकते हैं, next target पे जा सकते हैं. I hope these tips will help you in succeeding with your New Year resolutions. Just remember that changing anything in your life takes time and patience to build that mind-body connection. Your mind and body needs you to go slow, go steady, and then eventually achieve your goals. So with that, I would like to thank you for watching this episode. I'll be coming back next week with yet another exciting topic. See you in the next episode. Bye.